Hey guys, welcome to my stream. क्या हालचाल? मैं विपक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूँ मित्रों। आज जाओ तो कुछ बातें कर लें। जैसा कि दिखाया हुआ है
In 2022, about 18,000 people from India have applied for political asylum in Austria. Mr. Secretary, 18,000 people from India have applied for वो दोस्त अब करते हैं Mr. Secretary, thanks so much for taking your time. तो ये जो है वो मिस्टर एस जयशंकर जी और ये जो वहाँ का ऑस्ट्रिया को जो ये है स्टेट के जो ये लेता है इंटरव्यू लेता है वो एंकर है उन दोनों की बात हुई देखो क्या बोलते हैं इनका बहुत जबरदस्त 14 मिनट का है थोड़ा फास्ट चलेंगे In 2022, about सब टाइटल मैंने ऑन कर दिया इसलिए कि तुम पढ़ सको from India have applied for political asylum in Austria. For several months, there was no other country with more asylum seekers here. How would you explain that? Well, I mean, I don't know the numbers. If you say so, I have to take you at it. वहाँ पे पॉलिटिकल असलम की बात की गई है कि वो जो इलीगल जाते हैं वैसा कुछ है ये बोल रही फिगर नहीं जानते इधर क्या बात होता है बस खाली पढ़ना No word. But my sense is that when it comes to irregular migration, sometimes, because these are done by syndicates and gangs, you never know where they end up with. I think what's important is not what happened in the past. It is that we have a commitment to ensure that movement and mobility is legal. We would like a regime, an agreed regime for that. It's good for the global workplace. It's good for the Austrian economy, and we have. That's one of the outcomes of my visit to. Another outcome is that you have assured Austria's foreign minister that India will take back all of these citizens who will not get asylum in Austria, which will probably be almost 100%. How fast will this happen? Look, in terms of our citizens, if they are proven to be our citizens, we obey. ये बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो इंडियन सिटीजन है अगर उनको वापस देने की बात है तो क्या होगा तो ये वही बता रहे हैं कि अगर हमारे सिटीजन मतलब इंडिया के सिटीजन अप्रूव हुए तब ये बोल रहे हैं कि they are proven to be our citizen we have an obligation that regard. But what is important in this obligation in this regard for us is to validate the fact that if there's somebody who's staying illegally, that they are our citizens. तो जी लीगली ले रहे हैं तो है कि उनको प्रूफ करना चाहिए बेसिकली डॉक्यूमेंट प्रूफ करना वही होता है if there are citizens, usually we work it out between the governments concerned. I can't give you a time frame on it because it depends on what is the level of proof that is provided for us and what are the preparations on the Austrian side. So you did not agree on a time frame today? No, we didn't. Frankly, we didn't get into that kind of discussion. That is for the immigration people to decide. As foreign ministers, what we did was to work out an agreed mobility and movement regime. So we were looking for solutions. We weren't into the details of returnees' problem. That there are other people whose jobs it is to do that. Let's talk about the war in Ukraine. As you are well aware, the यूक्रेन का बात आया यहाँ पे अब वो माइग्रेशन की बात होगी अब यूक्रेन का बात है यूक्रेन की लड़ाई के बारे में बात होगी क्या बोलता है पूछता है world noticed that India, as a very influential country, has never publicly condemned Russia's assault and invasion into a neighboring country. Why is that so? Can you really be neutral in a war for which? साला ये साल हमेशा हर पत्रकार का ऐसे होता है हमेशा जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तब से हर बार इसको भाई कितना बार जवाब देगा यार पगला ये लोग कुछ अलग चाहता है जवाब देना खैर कोई बात मिस्टर जयशंकर लोग सुनो क्या जवाब दिए होंगे आई होप यू यूजुअली सेम जवाब दिए होंगे खैर Obviously, one side bears more responsibility. Well, look, I think in international relations, you have sometimes very complicated situations, and where we are concerned, we have always taken the position that the way out is for the countries concerned to get back to dialogue and to diplomacy. To sit down, but is this complicated? इस जो पत्रकार टोकता है ना बहुत खड़ा ना पूरा सुन ले फिर टोक नहीं पहले भी जो पॉइंट देना है पॉइंटर देना है पगला चुतिया Situation, is this
really complicated? There's just absolutely. one big country invading its neighbor. No, look, I can give you many instances of countries. ये पूछो, ये बात कर रहा है सिर्फ एक इंसिडेंट का। अब ये बोले कि ये बहुत ऐसे इंसिडेंट है, उसके बारे में बता रहा है जिसमें बड़े कंट्री इतनी छोटे कंट्री को इन्वेट किया है। Who have violated the sovereignty of another country. If I were to ask where Europe stood on lot of those. अच्छा, आप ये पूछे कि उस समय यूरोप कहाँ था जब ऐसा हो रहा था, क्योंकि उस समय यूरोप से तो शायद बात नहीं गई होगी, इसलिए यूरोप को प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए यूरोप नहीं चुप था। उनका ये कहना है, बेसिकली ये खुल के नहीं बोल सकता, बट मैं बोल सकता हूँ, आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई कैन स्पीक व्हाटएवर आई वांट टू स्पीक। I'm afraid I'll get a long silence. तो ये इन्होंने आईना दिखा दिया कि तुम जब चुप रहे थे, जब तुम्हारे पे आई तो तुम भौंकना शुरू किए हो, तुम चुप रहते, तो ये बात बोलना चाह रहे हैं। So do understand one thing. At the end of the day, we make judgments in foreign policy based on what we think are our long-term interests and what is good for the world. But you and Prime Minister Modi have already said that, regularly call on both sides to stop their war and to negotiate. However, cannot really urge Ukraine to stop defending itself. After all, there are no Ukrainian tanks in Russia. There are Russian tanks and planes and missiles destroying Ukraine. I think that's a bit of a misrepresentation. I think what we do is to say, get back to dialogue and diplomacy. There was that. ये वो कुछ और एंगल से बता रहा था, इन्होंने वो एंगल को स्पष्ट कर दिया कि वो चाहते हैं कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से मसला हल हो। अब तुम कौन किस पे चढ़ाई कर रहा है, क्या चढ़ाई कर रहा है, कौन सही कौन गलत, इसमें नहीं पढ़ना है अपने को। दोनों गलत है, दोनों सही है, दोनों को टेबल बिठा बात करो, सिंपल कट एंड शॉर्ट। तो यही बोलना चाह रहे हैं सिंपली कि अपने को कोई मतलब नहीं कौन गलत कौन सही है, मेरा वो भी दोस्त है, मेरा वो भी दोस्त है, दोनों को लेकर बैठेंगे, साथ में बात करेंगे, सिंपल सी लॉजिक। Dialogue and diplomacy in the early days of the conflict. So it's not that it didn't happen. So it's not for us to put conditions and to say this country is equal to that country. ये वही बोलना चाह रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो वही समझा रहे हैं। So that's your judgment. ये बताइए कि तुम्हारा जजमेंट हो सकता है, मतलब वेस्ट का जजमेंट, इंडिया का ये जजमेंट नहीं है। I think we have been very clear that this conflict is not in anybody's interest, including theirs. सवाल बहुत सीधा था कि आपने ज़्यादा बार रोके, इसका जवाब दो, कितना भयंकर जवाब है। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहा है भाई तो फॉलो करो इसको, इनको फॉलो करो, मस्ट फॉलो पर्सन पॉलिटिकल साइंस के लिए खासकर। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर को कितना घुमा फिरा के बोला जाता है, अब कितना बेस्ट पे बोला जाता है। पढ़ो, सुनो। But you wouldn't say it more explicitly. फिर सुनो। Your judgment should urge Russia to stop war. I think we have been very clear. We have been very clear. This conflict is not in anybody's interest. और ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों के किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, including this. कह दिया कि हाँ we are saying to stop shit from war. और But you wouldn't say it more explicitly. I'm a more explicit, मतलब और ज़्यादा, मतलब वही डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये बोलना चाह रहा है। It is my job to conduct foreign policy which serves my national interests and which serves. ये लगेगा, ये डिप्लोमेटिक है, जो serve my national interest and which. What I believe is a long-term pathway towards peace and. किस पे चला सकता है लंबा पीस के लिए, वो बताता है। Let's talk about its interests. India does not take part in Western sanctions against Russia, but has increased its imports from Russia 5 times since the war began. By this, are you not helping Moscow? Are you not financing Russia's war? Europe. जो ये बोलना चाह रहे हैं कि रशिया को वॉर को आप फाइनेंस नहीं कर रहे हो, परचेज तेल लेके। ये बोलना चाह रहे हैं कि क्यों तेल ले रहे हो, सैंक्शन लगाया तुम भी बोल रहे हो। क्या आगे सुनो रिप्लाई। Imported in the same period. ये कहना कि हम नहीं ले, तुम भी मत लो, वो कट्टी कसम। वही सीन आगे देखो रिप्लाई क्या। 60 energy. Europe for the same period 6 times the energy watch, 6 गुना ज्यादा एनर्जी लिया। India did. जो इंडिया से 6 गुना ज्यादा लिया। Europe decreased its imports a lot and dramatically since there was not a new multi-but no, essentially, if it is a matter of principle, why didn't Europe cut on the first day? ये बोल रहे हैं वो प्रिंसिपल वाली बात चलेगी कि मतलब वो गलत हो रहा है तो नहीं लेना चाहिए, तो ये बता रहे हैं प्रिंसिपल की बात है, तो यूरोप ने पहले दिन क्यों नहीं कट किया।
वो लेते चले गए रशियन ऑयल, तो वही कंपैरिजन बता रहे हैं कि पता कितना दोगला होता है वेस्ट, यूरोप खासकर। Why didn't we ठेठ भाषा में बोले तो कितना, गाली का उपयोग नहीं करूंगा, कितना ठेठ भाषा में बोले, कितना घटिया, कितना वाहियात, कितना दोगला है, दुमुहा सांप है ये। see on 25th of February a complete cutoff of energy imports from Russia? But You isn't that can't say basically you उन्होंने 25 तारीख को क्यों नहीं क्रॉस कर दिया रशिया से कोई सब एनर्जी वाला, वही बताना चाह रहा है। can't say it's my principle, but by the way, I'll do it by my timing. मतलब मेरा ये उसूल भी है, बट मैं अपने समय पे इसको लागू करूंगा, इनका ये कहना है। फिर अच्छा है okay, भाई। but isn't it the difference between decreasing your imports but still making sure that Europe is not freezing to death in the winter, or just increasing your imports by 5 times? No, Europe has managed to reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. If that's what it's manageable. No, it's manageable. Maybe a little bit of an It's manageable. Now, if at 60 लेकिन एक बंदा बहुत जबरदस्त टूकता है, बट वो बंदा वहां से छोड़ता नहीं, अपना पॉइंट कंप्लीट करने के बाद दूसरा पॉइंट पकड़ता है, बहुत जबरदस्त चीज है, ये चीज सीखने वाली है। thousand euros, whatever is your per capita income, you are so caring about your population. क्या बोले, Your if now if at euros is your 6,000 per capita income. 6,000 पर पर्सन की कैपिटल इनकम है, You are so 60,000। caring about your population. तो जब 60,000 आप कमा रहे हो तो आपको केयरिंग है, वही आगे बोल रहा I है। have a population at $2,000. हमारा $2,000 प्रति व्यक्ति की कमाई है। I also need energy. वी ऑल्सो नीड एनर्जी, हमें I जो don't एनर्जी की जरूरत है, I'm not in a position to pay high हम उस जगह पे नहीं जहाँ हम हाई प्राइस पे कर सके। prices. The price of oil has doubled. और क्रूड ऑयल की बात हो रही है, डबल हो चुका है जिसका प्राइस अभी। So, and what Europe is doing is also moving into the Middle East यूरोप जो है मिडिल ईस्ट में मूव कर रहा है, and diverting production out सऊदी अरब की बात हो रही है यहाँ पे, to the Middle East into Europe और डाइवर्ट कर रहा and है, raising prices. और प्रोडक्ट को डाइवर्ट कर रहा है एंड प्राइसेस को हाई कर रहा है। So European actions actually are putting pressure on the global oil markets and on my imports ग्लोबल ये है ना, प्राइस कैप लगाने की बात की थी, उसकी बात कर रहे as हैं। well. So I think it's something which, इससे अपन भी अफेक्ट, मतलब वी इंडियंस आर आल्सो गेट अफेक्टेड। if European political leadership, understandably, would like to soften the impact on their population, I think it's a privilege they should extend to other political leaderships as well. मतलब अगर अपने लोगों के लिए सहूलियत खोज रहे हैं तो दूसरे को भी अलाउ करना चाहिए कि वो भी अपने लोगों के लिए सहूलियत खोजें, बेसिकली ये करना है। Are you reluctant toward Moscow as well, because Russia is India's most important supplier of weapons and military equipment? And therefore, Are you reluctant to criticize Moscow? no, I don't. ये सेंटेंस अधूरा था, इसको उन्होंने पूरा करवाया कि अगर आप डरते हो, बेसिकली तुम डरते हो मॉस्को से, आप डिपेंड हो रशियन के हथियारों पे, उसकी बात है, कि आप डिपेंडेंट हो इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे, ये उनका कहना है। सुनो, Look, एलाई बोला था, एलाई। we have a relationship with Moscow. We've had a long-term relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was the relationship मतलब दोस्ती आ रही है, रिलेशनशिप, हिस्ट्री देखो हमारे रिलेशनशिप की कब से कब तक है, वो बता, एक्सप्लेन कर रहे क्यों, built in a period when Western democracies वो कब बना, उसकी रीजन बता रहे हैं। used to arm a military dictatorship called Pakistan. जो वेस्टर्न मीडिया, वेस्ट में जो होते हैं, अमेरिका, वेस्ट, ब्रिटेन और जो भी लोग हैं, उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो है वो पाकिस्तान में स्टैब्लिश किया, जैसे कि याया खान और कौन कौन से उसके जो भी मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, उनका बहुत बड़ा। अभी हाल ही में कौन था, लास्ट चौकू लगा था, मुशर्रफ, उसकी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रही है। And deny India defensive weapons. So इंडिया के डिफेंस को डिफेंड नहीं किया, नहीं तुम झूठ बोल, तुम ऐसा उसकी we are talking about principles. Let's talk a little bit of history out here. प्रिंसिपल की बात करने से पहले इतिहास की बात करें। So how did the Indian exposure to Russia and previously to Soviet Union get built up? इंडिया का रुझान कैसे गया वो बता दो। Because the Western यूएसआर के पास democracies, for whatever reason, decided that their natural partner in our part of the world was a military dictatorship. इनको बाहर को लगा कि जो पार्टनर है ना, जो डेमोक्रेसी की जो पार्टनर है वो मिलिट्री डिक्टेटर, मतलब बेसिकली वो मिलिट्री वाला वहाँ पे रूल करे, तो वो उनके लिए डिक्टेटर वो था, डेमोक्रेसी था, वो बताना चाहिए। डेमोक्रेसी को हटा के मिलिट्री वाले को अपने पास रखो, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। Would you consider India an ally of Russia? इंडिया एलाई फॉर अस, ये जो मैंने कहा था ना, एलाई समझते हैं, वो बता रहे हैं। I think India doesn't
We are an independent country. We do not uh, define ourselves or perceive ourselves in alliance terms. That's very much a Western. ये यहाँ पे तमाशा पड़ा है। सुनो, Define ourselves अपने आप को डिफाइन करते or हैं perceive ourselves in alliance terms. इन alliance। That's very much a Western ये जो है वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी, मतलब आप लोग के द्वारा थोपा गया, आप लोग समझते हैं वैसा। terminology. It's not something. It's not a term that we. नॉट दैट वी, कि हम लोग नहीं यूज करते कि हम लोग एलाई नहीं है। Before you said you're a diplomat. हम लोग दोस्त मित्र एलाई नहीं होता, मित्रता अलग की होती है, तो ये बताना चाह रहा है। But several weeks ago, you called Pakistan your name of terrorism. But I did it Epicenter of terrorism। again today without using the word Pakistan. Yes, and आपने बोला, मतलब ये बोले हाँ आपने बोला है, लेकिन मैं दोबारा बोला है, हाँ आपने बोला है। this पाकिस्तान की गजब में doesn't sound very diplomatic, does it? इनको लगा ये डिप्लोमेटिक साउंड नहीं करता। No, because you are a diplomat भाई क्या बंदा है, हर जगह जाओगे इनके पास कहते हैं यार doesn't mean you're untruthful. डिप्लोमेटिक होने बोलेंगे अंतु, मतलब कि मैं झूठ बोलूँ। I could use much harsher words than if it मैं और ज्यादा पूरा खराब वर्ड यूज कर सकता हूँ, ये बोलना चाह said. रहा हूँ। मतलब स्टेकर सकता है, सब ले सकते हो अपने टर्म। So believe me, एपिक सेंटर से भी बड़ा है वो टर्म, ये बताना चाह रहे हैं। considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word because this is a हम लोग का जितना भी हुआ है ना, उसके लिए एपिक सेंटर यूज करना बहुत ही डिप्लोमेटिक, बहुत ही आराम वाला, बहुत ही हल्का शब्द है, ये बोलना चाह रहे हैं। ये बोलने के लिए आगे भी जा सकता है। country हम लोग पाकिस्तान का पीके एम के ऐसे नहीं बोलते, पाकिस्तान पीके पीके बीएचडी जो बोलते हैं, which has attacked the Parliament of India पीएमसी के बोलते हैं ना, वही वाला होता है। some years ago, which attacked the तो इन्होंने अपाजा का अटैक गिरा दिया, city of Mumbai, मुंबई का अटैक गिरा था 26/11, which went after hotels and foreign tourists, 26/11 होटल और ताज होटल और नारियल पर बहुत उनके डरता है, which every terrorist across the border. So some जो हमेशा टेररिस्ट भेजता है उनकी बता रहे हैं, मतलब जो लिस्टेड है वो बता रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है, फैक्ट में जो है वो बता रहे हैं, जितना भी यूएस में डॉलर दिया वो सब बता रहे हैं। that's when we Of talk. course not as a country. Well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? ये तो अच्छा था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बता, ये बोला जा रहा है कि सुनो फिर से पॉइंट पे देखना Which तो every day sends terrorists इतना across अच्छा था, the पाकिस्तान के वर्ल्ड लगा लो बाकी सबसे border. So some, across the that's when border, we Of talk. course not as a country. of course not as a country, Well, if you where if you control your sovereign space, अगर तुम अपने सॉवरेन को कंट्रोल करते हो तो पाकिस्तान की बात होगी, which I believe they do, जो मैं चाहता हूँ कि वो करते होंगे। if the terrorist camps operate in broad daylight अगर टेररिस्ट कैंप डे लाइट में ऑपरेट हो रहा है, दिन की उजाला में, in cities in a city with recruitment and financing, financing, can you really tell me that the Pakistani state the Pakistani state, Pakistan, the world doesn't know what's going doesn't know about what's going on, especially if they're being trained in military level combat? ये वर्ल्ड का है, वो पाकिस्तान के लिए पहला वाला था, अब ये दूसरा वाला वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड नहीं बोलने वाला, बस पाकिस्तान रेफर टू वर्ल्ड, यहाँ पर रखेगा, समझ लो बात को, Tactic. ये पूरे दुनिया को चेतावनी है भाई, पहले बता रहा हूँ, सुन ले, So, अगर नहीं पता है तो प्लीज फैलाओ बात को, जब आपको डाउट है आके बात करो, लिंक दे दूंगा मैं। so, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation अब यहाँ यूरोप का रिपीट, वहाँ पे वर्ल्ड मतलब अमेरिका में, यहाँ पे यूरोप का रिपीट, स्पेशली यूरोप, of these practices which have been going on for multiple decades? यूरोप कहाँ था बे आज से पहले, क्यों नहीं बोला, चुप क्यों था, हिस्ट्री निकाल के देखो यूरोप की, एक बार बोला हो कभी भी कि हाँ इंडिया में जो भी गलत हुआ,
26/11 पे बोला हो, उससे पहले बोला हो, तो ये ना आना दिखाना हुआ। Does the world have to be concerned that there someday will be a war between India and Pakistan? I think the world has to be concerned that अब ये पूछ रहे कि क्या इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होगा, ये कंसर्न करे वर्ल्ड, अभी बता रहे वर्ल्ड को क्या सोचना चाहिए वो बता रहे हैं। there is terrorism going on, and वर्ल्ड को सोचिए कि वहाँ टेररिस्ट वहाँ पे the world स्टार्ट often looks away. The world बिल्कुल टेररिस्ट की तरफ देखना चाहिए, लड़ाई हो रही है उसकी तरफ नहीं। often feels it's not my problem उनको फील करिए उनका प्रॉब्लम, उनका भी प्रॉब्लम है, because it's happening to some other country. I think the world needs to be concerned about how sincerely and strongly it takes up the challenge of terrorism. Has the world to be concerned about a future war between India and Pakistan? I think the world needs to be concerned about terrorism. वो देखो वार की फिर वही बात है, वार के पीछे पूछा कि वार हुआ कि नहीं हुआ, तो टेररिस्ट का फिर कहोगे यार वार छोड़ो। Because yeah, sure. Because look, if you pose it the way you do, that's like giving a free pass to terrorism, saying, let's worry about the next consequence of it. I am worried about the terrorism. Okay, let's change the subject. You frequently said that India has a very ठीक है, यहाँ पे जवाब मिला तो let's change topic। क्या बोल रहे हैं? Consequence, giving a free pass to terrorism. नेक्स्ट वर्ड की बात कर रहे हैं, वो दूसरा वार होगा उसको देख सोचो। Next consequence of it. I am उसका क्या consequence होगा? worried about the terrorism. I मतलब इंडिया, इंडिया is worried about terrorism। Okay, let's change the subject. You frequently said that India has a very complicated relationship with your neighboring China. Many people around the world are quite concerned that China might in the near future intervene militarily in Taiwan. Do you share this concern? चाइना और ताइवान के बारे में पूछ रहे हैं। I think there's a larger concern which is based on our experiences. The concern is that we had agreements with China not to mass forces in our border area. मैंने तो बता दिया कि फोर्सेस के बारे में जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर क्या हुआ उसको and they have not observed those agreements, which is why we have the currently tense situation that we do. तो बता दिया कि उन लोगों ने वो नहीं किया, इसीलिए करंट सिचुएशन जो हुआ, जो मार पड़ी चाइनीज को, इसके बारे में बता रहे हैं। चाइनीज पीएनएस सोल्जर्स we had an agreement not to unilaterally change the line of control, which they have tried to unilaterally do that. So there is, I think, issue, a perception that we have, which derives directly from our experiences. Now, where else the status quo may change or not change, I would hesitate as a foreign minister to predict publicly. I may have my own views and assessments, but I certainly can share my experience, and my experience is that written agreements were not observed, that we have seen levels of military pressure which in our view has no justification. China would say the opposite. They would say that India had not obeyed different agreements. But obviously, I think it's difficult for China to say that for this reason. The record is very clear because today, there's a lot of transparency of satellite pictures. If you see who moved the forces to the border areas first, I think the record is very clear. So it's very difficult for China. सबूत तमाचे पे दे मारा है, तमाचे पे दे मारा है कि नासा सैटेलाइट निकालो देखो वर्ल्ड न्यूज में, गजब तमाचे पे दे मारा। To say what you suggested, they could. India will probably overtake China as the world's most populous country within this year. Is this fact of any political significance to India, or is it just a mere statistic? We'll know that when we reach there, because we have never used numbers in that. इनको पॉपुलेशन चिंता हुआ इंडिया का, सुनो, इनको चिंता है वर्ल्ड को। Maybe other countries have. Say, to a large extent, it is a statistic, large extent. But you will have a situation where the world's most populous country is not among the permanent members of the Security Council. And what does it say about the state of the UN?
अब परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी पे बात करिए, कितना बड़ा स्टेट मतलब पॉपुलेशन होल्ड कर रहा है कंट्री, परमानेंट मेंबर नहीं है उसके होता Is the case. So it's a kind of a both a yes and a no. It's partly a statistic, but I think it's a statistic which means a lot. For several years, you have called for a permanent seat on the Security Council, as have Brazil, as has Japan or Germany. How long will it take, from your point of view, till this reform of the Council will actually become reality? Well, ideally we'd like it yesterday, but the problem I think is that those who are today enjoying the benefits of permanent membership clearly are not in a hurry to see reform. I think it's a very short-sighted view, in my opinion, because at the end of the day, the credibility of the UN and, frankly, their own interest and effectiveness is at stake. My sense is it will take some time, hopefully not too much time. I can see a growing body of opinion among UN members who believe that there must be change. It's not just us. You have entire Africa, entire Latin America left out. Developing countries vastly underrepresented. I think the State of the World, this was a organization invented in 1945. It's 2023. And you would have to guess for a year when this will happen? What would it be? No, I won't guess because I know the complexities of this process. It's a tough one. I'd be honest with you. It's a tough one, but I don't think because it's a tough one we should give up. टफ वन क्यों बोल रहे हैं, परमानेंट मेंबर की सीट की टफ वन। On the contrary, I think because it's a tough one, we should actually up the ante, increase the feeling in wide parts of the world that this reform is absolutely essential. Thanks so much for your time. Well, thank you. It's a great pleasure. Thank you. It's a great pleasure from my side of. Thank you very much. तो ये था गाइस जयशंकर जी का पूरा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो और आ जाओ यहाँ पे चैट करना है, किसी को तो बात करनी है, किसी को अपना ओपिनियन रखना है तो आ जाओ। तो ठंड बहुत है, 9 डिग्री हो गया है, तो सोने जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए क्या करना पड़ता है आ जाओ, हम लोग अपना एक नया भी पक्ष मजा आएगा यहाँ बैठ के कमेंट करेंगे तो। ठीक है, चलो अब स्ट्रीम बंद करते हैं, आधे घंटे हो गया। आई होप अच्छा लगा होगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।